Good afternoon, everyone. Very, very good afternoon. Am I audible, visible, all okay? If everything is fine, तो बिना समय गवाए प्लीज अपना नोटबुक्स निकाल लीजिए. Yeah, seems fine to me as well. Right? Very, very good afternoon. ओके, आगे सारे निकाल भी दिए. वेरी गुड. सो यूनिट नंबर 6 की अगर मैं टिपिकली बात करूं तो आप सबको पता है छोटा सा यूनिट है ना. कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो इसके क्या ही बनेंगे जब टॉपिक ही नहीं होते ज्यादा. लेकिन फिर भी अब हम लोग क्विकली देख लेते हैं क्वेश्चन बनते क्या. देखो मोस्टली ऑब्वियसली मतलब यूनिट के बारे में सोच के ही नहीं फीलिंग आ रहा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते होंगे. एंड आपका फीलिंग काफी हद तक सही है. कैसे सही है ये देख लो. सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो कई बार हमें दिख रहा है पूछा जा चुका है दैट इज फॉर 6 मार्क्स एंड अ डायरेक्ट क्वेश्चन. Similarly, question 2 के अंदर there's a small case study which is once asked in an RTP. Again, the biggest ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन जो है बड़ा वाला क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का है. डायरेक्ट क्वेश्चन. सो मान के चलो एक बार कंटिजेंट एक बार क्वासी ऐसे पूछ लेते हैं ये लोग. समझ कर. देन उसके बाद में केस स्टडी है जो कि आरटीपी में पूछी गई थी. देन अनदर लाइक अ स्मॉल केस स्टडी ऑफ आरटीपी. एमटीपी में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये सब कुछ मिला मिला जुला कर भी अगर हम देख लेते तो 8 ही क्वेश्चंस है. ठीक है. जिसमें से एक क्वेश्चन आई वुड से डेफिनेटली रिपीटेटिव है इसके अंदर बिकॉज वो ठीक है अलग पूछ लिया था इसलिए अलग डाल दिया है. बाकी आंसर सेम ही है. ठीक है. हाँ जी नमस्ते. दिल्ली वाला नहीं होगा लेकिन दूसरा वाला होगा. है ना. दिल्ली में तो जो हो गया दैट दैट इज देयर इन दिल्ली. बट यस बाकी मैराथन्स तो ऑब्वियसली होंगे. अब अगर आप लोगों की परमिशन हो तो क्या हम शुरू करें देवी और सज्जनों. रेडी. चलो फिर. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. गुड क्वेश्चन. है ना. अच्छा क्वेश्चन है. आंसर भी इसका बहुत टू द पॉइंट अब हम लोगों को लिखना है. चलो रेडी हो जाओ. आंसर शीट निकाल ही ली है तुम लोगों ने तो मैं भी मेरी आंसर शीट खोल लेती हूँ. निकाल के मैंने भी रखी है. यस. हियर वी गो. यूनिट नंबर 6 आरटीपी एमटीवी पीवाईक्यू बैच. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बैंक यूनिट 6 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इतना लिख लेना ताकि बाद में जब देखने बैठोगे ना क्वेश्चन आंसर्स को तो ये नहीं लगेगा ये आंसर कहाँ से आए कौन सा क्वेश्चन है.
It is a contract to or not to do something, to do or not to do something if some event collateral to such contract, collateral to such contract does or does not happen. ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी और इवेंट पर डिपेंड करता है, जिसके होने या नहीं होने से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, इसी के आगे लिख देते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट in which performance becomes due only on happening of some event. Full stop. Essential characteristics. क्या क्या essential characteristics? There must be a contract to do or not to do something. B. Performance of contract depend performance of contract must depend upon happening or non happening of some event, happening or non happening of some event. Number 3, happening of event is uncertain. D. Event on which performance is depend is an collateral event. ठीक है, and number 5, it should not be mere
will of promiser, वाकई कंटिजेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है। ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, भाई कंटिजेंट में इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, सब कुछ ही आ गया। These contracts depend upon these contracts are dependent on happening of an uncertain future cannot be enforced until event happened. Number two, contingent contract is to be performed contingent event is to be performed if particular event if particular event does not happen. Full stop. Contract is contingent upon how a person will act at an unspecified time, act at an unspecified time, the event shall be till the event shall be considered impossible. Full stop. Contingent event to do or not to do impossible event to do
or not to do an impossible event happens are void are void if fact is known to parties. If such fact is known to parties. मेघना, मैं आंसर लिख रही थी. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जब रीइंबर्समेंट होता है, ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का रीइंबर्समेंट, सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स मोबाइल लेकर आ गया, हमने उसको रीइंबर्स कर दिया, ठीक है. इन केस ऑफ कॉशन, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में पैसे वापस करने का ऑब्लिगेशन होता है. आपका एक्चुअली मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया फ्रैंकली. इन केस ऑफ कॉशन, और आई थिंक आप कहना चाहते हो अनड्यू इन्फ्लुएंस में पैसे वापस करने का ऑब्लिगेशन होता है. हाँ, अगर कोई किसी के साथ किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती करके पैसा ले रहा है तो डेफिनेटली जिसने भी बेनिफिट लिया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दैट पर्सन मस्ट गेट द बेनिफिट बैक. ठीक है. सो फॉर दैट एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी से जोर जबरदस्ती करके उसका फोन लिया 10,000 रुपए में, ठीक है, आपने उसको 10,000 दे दिए, बाद में उसने केस कर दिया, आपको फोन वापस देना पड़ा, उसको भी 10,000 वापस देना पड़ेगा. दैट इज द होल आइडिया इज. ठीक है. यहाँ पर हमारा आंसर लिखकर खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का. अब क्वेश्चन नंबर 2 पर क्विकली चलते हैं हम लोग. So PQR, a hospital in Delhi, recruits Dr. A on contract basis for a period of 3 months. The hospital management promises to pay Dr. A a lump sum of 1 lakh rupees if Dr. A tests positive for novel coronavirus during the contract period of 3 months. ठीक है. Identify the type of contract it is. It is a contingent contract. And highlight the rules of enforcement. ऊपर लिख लिया हमने, आंसर वही है. So the contract to do or not to do something, on happening or non-happening of some event is a contingent contract. ठीक है. तो अब यहाँ पर ये जो भी है 35 यहाँ पर लगेगा, which says कि contingent contract is to do or not to do something if a specified uncertainty happens. ओके. तो यहाँ पर डॉक्टर ये अगर कोविड पॉजिटिव हुआ तो ये हॉस्पिटल को 1 लाख कॉम्पनसेशन देगा. तो कुल मिलाकर ये है. ठीक है. मतलब कुछ है नहीं ज्यादा लिखने के लिए. I am asking specifically for undue influence. You said caution, isn't it? Anyways, undue influence में भी obviously, but undue influence के अंदर क्या होता है, मॉरल प्रेशर या मेंटल प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसको प्रूव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है. Yet anyone receiving any benefit under any voidable contract, irrespective of whatever it is, then yes, they are eligible to get the money back. Now, what do you mean by term quasi contract? State the characteristics. अब यहाँ पर भी वही है, what is a quasi contract? हमें वो cases बताने that deemed to be the quasi contract. तो अब मैं सोचूं मैं थर्ड और फोर्थ का एक कंबाइन आंसर लिखवा दूं तुम लोग को. ओके. So question number 3, question number 4 of question bank. Quasi contract. 1 मिनट, आंसर शीट दिख रही है नहीं दिख रही है तुम लोग को?
दिख रही है ना? हाँ फिर ठीक है। A contract resembling to a contract resembling to any contract which is created पता नहीं, ठीक है। A contract resembling to any contract which is created, however, however, such contracts are imposed by law. Such contracts are imposed by law and parties have never entered into a contract, never entered into a contract by law and the parties have never entered into a contract such obligations such obligations imposed by law are referred as quasi contracts. Full stop. साइलेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं? It does not arise from any agreement of parties number 2 duty not promise is basis of contract number 3 it is
always right to money not liquidated sum of money. Number 4, right is available against specific person not against whole world. Number 5, suit for its breach may be filed in same way as any other कॉन्ट्रैक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने प्रॉपर इसके जो भी साइलेंट फीचर्स है ना सबको प्रॉपरली जॉट डाउन कर लिया है। ओके, अभी हम लोग करेंगे इसके बाद में इसके रूल्स। इज इट डन? अगर हो गया तो मैं चलूं केसेस दैट डीम टू बी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फुल cases which are deemed to be quasi contracts. Claims for necessary supplied to person incapable of contracting. Claim for necessary supplied to person incapable of contracting. Number 2, payment by interested person. Number 3, obligation of person enjoying
non gratuitous act. Number 4, responsibility of finder of goods. And last but not the least, money paid by mistake or under poison. जोर जबरदस्ती में अगर कोई भी पैसा दोगे आप किसी को, है ना, पॉइजन में दोगे, जोर जबरदस्ती में दोगे, गलती से दोगे, तो इट मस्ट बी रीपेड और रिटर्न्ड. दैट इज द ओनली आइडिया. ठीक है. हो जाए तो बता देना. यहाँ पर केसेस भी हो गए हमारे अंडी हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया. आधे क्वेश्चन हो गया. नॉट बैड. गुड स्पीड. ये अब छोटे छोटे से. कर देना दो दो लाइन में. एग्जाम में अगर सिर्फ केसेस ही पूछे जा रहे हैं 6 मार्क्स के लिए, डेफिनेटली दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा. मैंने जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 2-4 लाइनों में एक्सप्लेन कर करके दिया हुआ है, उससे आप गो थ्रू कर लीजिएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. X, a minor, was studying in MCOM in a college. So X जो कि माइनर है वो MCOM में पढ़ रहा है. On 1st July 2019, he took a loan of 1 lakh rupees from B for the payment of college fees and to purchase books. Okay, and agreed to repay by 31st December. X possesses assets worth rupees 9 lakh. हाँ, कोई रिस्क नहीं है. On the due date, X fails to pay back the loan to B. अभी B उसके प्रॉपर्टी में से रिकवर करना चाहता है. कैन ही डू सो? यस. एग्जाम में आएगा तो भी 2 या 3 मार्क्स का आएगा ये. तो सिंपल यस, बी कैन प्रोसीड अगेंस्ट एक्स एसेट, है ना, क्योंकि वो लीगली तो केपेबल नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जब भी नेसेसिटी सप्लाई होती है तो उस केस में डेफिनेटली अमाउंट रिकवरेबल होता है. नेक्स्ट, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. So P left his carriage on D's premises. The landlord of D seizes the carriage against the rent due from D. P paid the rent and got his carriage released. Can P recover the amount from D? Yeah, he can. भाई उसने क्या किया, डी के प्रेमाइसेस में अपना कोई सामान रखा. अब जो डी का लैंडलॉर्ड है उसने वो सामान सीज कर लिया डी का समझ के. ओके, तो अब पी जब वापस आया उसने उसके लिए रेंट भी पे किया. तो अब वो क्या, जो रेंट उसने पे किया है खुद की कैरेज को छुड़वाने के लिए, क्या वो डी से ले सकता है? बिल्कुल लेगा ना. डी का ही रेंट था, उसने तो इसलिए पे किया, नहीं तो उसको उसका कैरेज वापस नहीं मिलता. डी इज लाइबल टू पे बैक. ओके. क्या हो गया, आप क्यों पूछ रहे हो आईसीआई को?
आई एम जस्ट एक्चुअली लुकिंग एट द चैट कि भाई तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए। इतना सुस्त 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 दिख रहा है मेरे को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एल ने अपना रेजिडेंशियल हाउस लेट आउट किया मिस्टर एम को 50,000 पर मंथ में फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अकॉर्डिंग टू द रेंट एग्रीमेंट बिल इज टू बी पेड बाय एल। समझ गए, लैंडलॉर्ड पे करेगा बिल। नाउ व्हाट हैपन, एल ने नहीं पे किया ड्यू टू फाइनेंशियल हार्डशिप। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया कि हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। एम ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया विद पेनल्टी, और बाद में उसको एल से जब उसने मांगा तो एल ने कहा मैं नहीं देता पैसे, तुमने क्यों दिए, तुमने अब अपनी इच्छा से भरे हैं तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा। वो रीइंबर्समेंट के लिए एलिजिबल है। समझ गए, एल का फेलियर था, वो इंटरेस्टेड पार्टी था, तो एम बिल्कुल रीइंबर्स कर सकता है या रेंट में से एडजस्ट भी कर सकता है। समझ गए। नेक्स्ट। ओह, पता ही नहीं चला आखिरी क्वेश्चन तक आ गए। देख लेंगे, लिख लेंगे इसको। राहुल found a smart watch in a restaurant. He then inquired about all the customer present over there, but the true owner could not be found. He handed over the same to the manager to keep it till the true owner is found. After a week, he was back to the restaurant to inquire about the watch, and manager refused to return to him. नहीं मिला तुमको भी क्यों दे। क्या राहुल वो रिकवर कर सकता है? कर तो सकता है, कैसे करेगा आंसर में बताएंगे। So this is question number 8 of question bank. दिख रहा है ना आंसर? हाँ। Responsibility of finder of lost goods. A person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to same responsibility as if he were a Bailey. Full stop. Thus, finder of lost goods has to take proper care of property as man of ordinary prudence. Number 2, no right to appropriate
goods. Number 3, restore goods if owner is found. Full stop. Based on above provisions, manager must return watch, watch ही घूमी थी ना, watch to Rohan as Rohan is entitled to retain watch found against everybody except Rohan. भैया या तो जो असली मालिक है उसके पास रहेगा या फाउंडर के पास रहेगा और किसी के पास नहीं रहेगा। ओहो, हमारी क्लास में गोकू है। हाय गोकू। आपने मेरे सारे सेशंस देखे होते पीएस व्लॉग्स तो आपको आंसर मिल जाता। नहीं, लास्ट की 3 यूनिट्स बचे हैं आदित्य। कल एक यूनिट होगा, परसों एक होगा, तरसों एक होगा। सो डेली वी आर गोइंग टू फिनिश 1 यूनिट। ठीक है, आपको सारे सेशंस देखने पड़ेंगे व्लॉग्स, ऐसे नहीं होता। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 6 खत्म होता है। कल हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 7। यूनिट 7 में भी काफी सारे क्वेश्चंस है। तो पहले 1 घंटे यानी 3 बजे से हम लोग करेंगे रिविजन और 4 बजे हम लोग करेंगे उसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। सो मिलते हैं कल के सेशन में। और जो सारे बच्चे अभी भी हमारे पेड सब्सक्राइबर्स नहीं है, जो ये जानना चाहते हैं कि यार रेगुलर क्लासेस कहाँ पर होती है और हम लोग किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जाना है अड्डा के वेबसाइट पर, वहां जाकर आपको सर्च करना है एकाग्रता सीए। ठीक है, वहां बहुत सारे कोर्सेज है, उसमें आपको एकाग्रता सीए दिख जाएगा। फिर आप अपनी चॉइस से फाउंडेशन या इंटरमीडिएट जिसका भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो उसे सिलेक्ट कीजिए एंड यू गाइस कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। ओके। फाइंडर कब सेल कर सकता है? जब भी गुड्स की वैल्यू का 3/4 वैल्यू वो ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है। सपोज सो को आपको कोई चीज मिलती है जो 100 रुपए की है ना, ऑलरेडी आप ओनर को ढूंढने के लिए 70 रुपए तो खर्च कर चुके हो। लाइक 3/4 तो कर ही चुके हो खर्चा, 75 रुपए खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। बचा हुआ यू कैन डू इट। ओके, आज तक हमारा जो भी हुआ है वो सारा कुछ हमारे ड्राइव पर अपलोडेड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, ऑलरेडी है, नोट्स का लिंक है, वहां पर आप जाइए। यूनिट 6 तक का सब कुछ अपलोडेड है। ठीक है यार, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।